સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. આપ સર્વેને શ્રી ગુસાઈજીના પ્રાકટ્ય ઉત્સવની અગ્રિમ મંગલ વધાઈ. આ પહેલા આપણે વાત કરી હતી કે નામ રાતના આખ્યા સ્તોત્ર કરી લીધા બાદ આપણે વલ્લભાખ્યા જોઈશું કે જેના કારણે આપણે શ્રી ગુસાઈજીના ગુણગાન કરી શકીએ અને તે રીતે આપણે શ્રી ગુસાઈજીના પ્રાકટ્ય ઉત્સવ મનાવી શકીએ. જે રીતે ઠાકોરજીએ ગુસાઈજીના પ્રાકટ્ય ઉત્સવના દિવસે જલેબી ઉત્સવ કરીને પ્રાકટ્ય ઉત્સવ મનાવ્યો, તે રીતે આપણે પણ જલેબી જેવા રસરૂપ ગુણગાન કરીને શ્રી ગુસાઈજીનો પ્રાકટ્ય ઉત્સવ મનાવીએ. અહીં ખાસ સૂચના આપેલી છે તે આપણે જોઈએ. આ વલ્લભાખ્યાન છે તે અનન્ય શિરોમણી ગોસ્વામી શ્રી રમણલાલજી મહારાજ, જેમનું ઉપનામ છે નિજજનદાસ, એમના કૃત ટીકા છે જે વ્રજ ભાષામાં છે અને ખૂબ જ સુંદર રસરૂપ વર્ણન કરેલું છે. તેમાં પહેલા જ સૂચના આપેલી છે કે વાચકોને નિવેદન આ પુસ્તકમાં છપાયેલ જે શ્રી રમણલાલજી મહારાજ કૃત ટીકા અત્યંત ભાવાત્મક અને ગૂઢ રહસ્ય લીલા નિકુંજ લીલાના ભાવોને પ્રગટ કરે એવી હોવાના લીધે આપને વિનંતી છે કે અલૌકિક ભાવ દ્રષ્ટિથી અવગાહન કરવું. આ પુસ્તક કેવલ આપને માટે છે, એટલે કે જેને ભાવ છે, અલૌકિક ભાવ છે, તેના માટે જ આ પુસ્તક છે. માટે જે વ્યક્તિ આ લીલા ભાવનાઓને સમજી ન શકે અને લૌકિક બુદ્ધિથી વિચારે એને બિલકુલ ન આપવું. એટલે આ આપણે જે કરીએ છીએ તે અલૌકિક ભાવથી જ શ્રવણ કરવું એવી અમારી નમ્ર અપીલ છે. સ્ત્રી ગૂઢ ભાવયુક્ત હૃદયના ઊંડાણથી પ્રગટ થયેલા આ ભાવો કેવલ અને કેવલ ભગવત રસિક તદીય વૈષ્ણવો માટે છે, જેની ખાસ નોંધ લેવી. એટલે જેને અલૌકિક ભાવ છે તેના માટે જ આ વલ્લભાખ્યાન રસરૂપ છે. માટે જેને અલૌકિક ભાવ હોય તેને જ આ વલ્લભાખ્યાન શ્રવણ કરવા એમ અહીં સૂચના આપેલી છે. હવે સૌપ્રથમ આપણે ગોસ્વામી શ્રી રસિકરાયજી મહારાજ શ્રી ઉપલેટાવાળા તેમનું પ્રાકકથન અહીં આપેલું છે તે આપણે જોઈ લઈએ. એટલે આ જે વલ્લભાખ્યાન છે તેનું સંકલન ગોસ્વામી શ્રી અક્ષયકુમારજી મહોદય મથુરા રાજકોટ કાલોલ આપે કરેલું છે સંકલન, અને આ પુસ્તક વૈષ્ણવોને ભેટમાં આપેલું હતું પોરબંદર. એટલે અહીં ગોસ્વામી શ્રી રસિકરાયજીના વચનામૃત છે તે આપણે પહેલા જોઈ લઈએ. પ્રાકકથન ગુર્જર ભાષાના પુષ્ટિ સાહિત્યનું મૂલ્યાંકન કરતા શ્રી ગોપાલદાસજી વિરચિત નવ આખ્યાન જે વલ્લભાખ્યાન તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. પ્રથમ વિચારણીય, ચિંતનીય જ નહીં, પુષ્ટિ રસનું પાન કરાવનાર એક મહાન કૃતિ કહી શકાય, જેમાં વલ્લભ વેદાંત તથા પુષ્ટિ ભક્તિનો ગજબનો સમન્વય છે. આ એવી ગુજરાતી કૃતિ છે કે જેના ઉપર સંસ્કૃતમાં ટીકા લખાયેલ છે, ઉપરાંત વ્રજભાષા ટીકા પણ મહાનુભાવોએ લખી છે. આ ગોપાલદાસજીના હૃદયમાં બિરાજીને પ્રગટ કરાવેલ શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણની વાણી છે. મથુરાવાળા નિત્યલીલા ગોસ્વામી શ્રી રમણલાલજી મહારાજે વલ્લભાખ્યાન પર લખેલ ટીકા ભાવવાહી છે અને વલ્લભાખ્યાનના માર્મિક રહસ્યને ઉદ્ઘાટિત કરનાર છે. નિત્યલીલા શ્રી રમણલાલજી મહારાજ એક મહાનુભાવ મહદ વલ્લભ વંશજ આચાર્ય હતા. શ્રી ગોકુલેશજીના સ્વરૂપમાં તન્મય બનેલ આપના મહદ સ્વરૂપના દર્શન કરનારાઓ પાસેથી આપના અલૌકિક ભક્તિ સભર ચરિત્રના અનેક પ્રસંગો સાંભળીને ઘણા મારી જેમ કૃતકૃત્ય થયા છે. આપની કડક આચારની મેંડના નિર્વાહને કારણે તત્કાલીન ગોસ્વામી આચાર્યોમાં એક વિશિષ્ટ અનોખો પ્રભાવ આપશ્રીનો હતો. આપનું પુષ્ટિ સંપ્રદાયનું અગાધ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યયુક્ત જીવનથી પ્રભાવિત થઈ અનેક વૈષ્ણવો આ શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુના
અનન્ય માર્ગ મહેત માર્ગનું અનુસરણ કરીને પોતાના જન્મ અને જીવનને સાર્થક કર્યું હતું. શ્રી ગોકુલેશમાં અનન્યતા કેળવવા માટે ભરૂચી પ્રકાર પણ અસ્તિત્વમાં હતો અને ભરૂચી નિમળિયા કલહ પણ એ સમયે અસ્તિત્વમાં આવ્યો હતો. શ્રી રમણલાલજી મહારાજે શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુના શ્રી મહાપ્રભુજીના ગ્રંથો પર તથા શ્રી સર્વોત્તમજી અને વલ્લભાષ્ટકની ટીકા તથા ગદ્ય મંત્રની ટીકાના આધારે શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ દ્વારા સ્વયં શ્રી મુખથી પ્રગટ થયેલ માર્ગ રહસ્યનું તલસ્પર્શી અધ્યયન કરીને સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરતા કે કોઈ શ્રી મહાપ્રભુજી દ્વારા પ્રગટ થયેલ પુષ્ટિ સંપ્રદાયના માર્ગથી અલગ માર્ગ યા પંથ નથી, પરંતુ શ્રી મહાપ્રભુજી દ્વારા પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ગ્રંથમાં જીવોના સ્વરૂપનું પૃથ્થકરણ કરતા પુષ્ટિ જીવો યા શુદ્ધ પુષ્ટિ જીવો જલ્દી પોતાના લક્ષ્ય યા ફળ તરફ ઉન્મુખ બની શકે એવો રસ્તો પુષ્ટિ ભક્તિના અંતર્ગત બતાવ્યો. એ માર્ગ શ્રી ગોકુલેશો પ્રશિષ્ટનું યથાર્થ જ્ઞાન અને અનુભવ આપશ્રીએ પ્રગટ કરી મહદપથગામી મહાનુભાવોને સ્વસ્થ અનુસરણ કરતા કર્યા. અન્યાશ્રય અને અન્ય સંબંધી મુક્ત કર્યા હતા. અન્યાશ્રય અને અન્ય સંબંધથી મુક્ત કર્યા હતા. જેમણે નિકટથી આપના ચરિત્ર અને ઉપદેશને માણ્યો છે તેઓ જાણે છે કે શ્રી ગોકુલનાથજીએ જેમ શ્રી ઠાકોરજીની સેવા કરી છે તેમ આપે પણ પોતાના સેવ્ય સ્વરૂપની જીવન પર્યંત સેવા કરી છે. આપની અનન્ય ટેકને કારણે તત્કાલીન સમાજનો અમુક વર્ગ દ્વેષ બુદ્ધિથી વિરોધ કરતો હતો, છતાં આપશ્રીએ તેમના માટે વિરોધમાં એક પણ શબ્દ કહ્યો ન હતો, બલકી માર્ગની પ્રાચીન પરંપરાના વિષયમાં આપની અસાધારણ જાણકારીનો લાભ અનેક ગોસ્વામી આચાર્યો ઉઠાવતા હતા. શ્રી વલ્લભાખ્યાન પર લખેલ આપની ટીકા વર્ષો પૂર્વ ગોલોકવાસી શ્રી પ્રેમલાલ મેવચા દ્વારા પ્રકાશિત થઈ હતી, જેનું પુનઃ પ્રકાશન થઈ રહ્યું છે. એ અત્યંત પ્રસન્નતાનો વિષય છે. આપના વચનામૃતો પણ શ્રી ગોકુલેશ સમાજ દ્વારા પ્રકાશિત થયા છે. એમનું પણ સંપાદન કરીને ફરી પ્રકાશન થાય એ આવકાર્ય બનશે અને શ્રી ગોકુલેશની અનન્યતાના પથ પર ચાલતા સુજાતિ સમાજને પણ સાચું માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત થાય એ જરૂરી છે અને તેથી ઘણી ભ્રામક ધારણાઓ તથા માન્યતાઓ ચોક્કસ દૂર થઈ શકે. શ્રી રમણલાલજી એટલે કે બળેતાજી જે એ પોતાના ભાવનું દાન અમારા પિતૃચરણ નિત્ય લીલા ગોસ્વામી શ્રી દ્વારકેશલાલજી મહારાજને કર્યું હતું, જેથી અમારા માતૃચરણ નિત્ય લીલા ભાભીજી મહારાજ તથા અમારા મોટા બહેનો નિત્ય લીલા પન્નુબા તથા મોરબા પણ આ માર્ગના મર્મને સમજીને શ્રી ઠાકોરજી તથા શ્રી ગોકુલેશજીની સેવા કરી હતી. નિત્ય લીલા ગોસ્વામી શ્રી માધવરાયજી તથા મને વારસામાં મળેલ આ માર્ગ જાણવા તથા માણવાનો અવસર મળેલ હોવાથી કૃતકૃત્યતાનો અનુભવ કરી રહ્યા છીએ અને અમારા પરિવારોમાં પણ આ સ્પિરિટ જળવાઈ રહી છે. એ કૃપાનંદ અવિસ્મરણીય રહેશે. આ અમૂલ્ય સાહિત્યનો લાભ ભગવદ રસ રસિક મહાનુભાવોને પ્રાપ્ત થાય એ માટે આ પ્રકાશનનું સ્વાગત કરું છું તથા ગોસ્વામી શ્રી કનૈયાલાલજી બાવા, શ્રી વસંત બાવા, શ્રી વિશાલ બાવા, શ્રી અભિષેક બાવા તથા શ્રી અક્ષય બાવાએ મને પ્રાક કથન લખવાનો અવસર આપ્યો એ બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સહ શુભ આશીષ. ગોસ્વામી શ્રી રસિકરાયજી. ગોસ્વામી શ્રી કનૈયાલાલજી માધવરાયજી મહારાજ ના આશીર્વચન. શ્રી માધવ પ્રભુ સાહિત્ય સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા શ્રી વલ્લભાખ્યાન જે શ્રી રમણલાલજી મહારાજ કૃત ટીકા સહિત પ્રગટ થઈ રહ્યું છે એ અતિ આનંદનો વિષય છે. ગુસાઈજીના અધર સુધારસ રૂપ ચરવિત તાંબુલના ફલરૂપ શ્રી ગોપાલદાસજીની ભાવ સમાધિથી ઉત્પન્ન થયેલ રસ સમુદ્ર રૂપ આ નવાખ્યાન ભગવદ રસ રસિક વૈષ્ણવો માટે સાક્ષાત શ્રી ગુસાઈજીની વાણી છે અને આ ગ્રંથના ટીકાકાર આપ શ્રી જે સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરે છે કે જે આ વાણીમાં સંદેહ કરે તો બહિર્મુખ છે. એથી આ પરમ અલૌકિક વાણી ગુર્જર ભાષામાં હોવા છતાં
સાર ગર્ભિત હોવાને કારણે ગૂઢ છે. પરંતુ શ્રી રમણલાલજી જેવા મહાનુભાવની ટીકામાં અહીં શ્રી ગોપાલદાસજીના હૃદયસ્થ નિગૂઢ ભાવોને ઉજાગર કરવામાં આવ્યા છે, જેથી રસિકજનો એનું આસ્વાદન કરી શકે. આવા સુંદર પ્રકાશન બદલ ચિરંજીવી અક્ષય બાવાને અને માધવ પ્રભુ સાહિત્ય સેવા ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ ગોસ્વામી ચિરંજીવી વસંત બાવા, ઉપાધ્યક્ષ ચિરંજીવી વિશાલ બાવા તથા ટ્રસ્ટીગણને હૃદયપૂર્વક આશીર્વાદ સાથે શ્રી વલ્લભના ચરણ કમલોમાં અભ્યર્થના કે આવા કાર્યો માટે સદા કૃપાબળ પ્રદાન કરે. ગોસ્વામી કનૈયાલાલજી મહારાજ. શ્રી મદન મોહન પ્રભુ વિજયતે. પ્રભુ નંદ કુમારો में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशयः. पुष्टि भक्ति संप्रदाय प्रवर्तक श्रीमद वल्लभ वंशज गोस्वामी श्री वसंत कुमारजी महोदय. प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद नित्य लीला गोस्वामी श्री माधवरायजी ताजजीની પાવન સ્મૃતિમાં સ્થાપિત અને સેવારત શ્રી માધવ પ્રભુ સાહિત્ય સેવા ટ્રસ્ટના માધ્યમથી પ્રથમ પુષ્પ રૂપે પુષ્ટિ પિયુષનું પ્રકાશન કરવામાં આવ્યું હતું, જેથી પુષ્ટિ માર્ગની પાયાગત સમજણ, સાંપ્રદાયિક વ્યવહારના શબ્દોની સમજ અને માર્ગને એક સંક્ષિપ્ત પરિચય આપવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી આપણા વૈષ્ણવોના બાળકો સંપ્રદાયથી, આપણા આદરણીય પૂર્વાચાર્યોથી અનભિજ્ઞ ન રહે એ મનોરથ શ્રી મહાપ્રભુજીએ પૂર્ણ કરાવ્યો અને વૈષ્ણવોમાં પણ પુષ્ટિ પિયુષ ખૂબ લોકપ્રિય બન્યું, જેની 5 આવૃત્તિ પ્રકાશિત થઈ. એ પૂજ્યતાજીના જ અનુગ્રહનું પરિણામ છે. હવે પછી આ સત્સંગ યાત્રાને આગળ વધારવા પ્રભુચરણ શ્રી ગુસાઈજીના કૃપાબળથી શ્રી માધવ પ્રભુ સાહિત્ય સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા દ્વિતીય પુષ્પ રૂપે પરમ ભગવદીય શ્રી ગોપાલદાસજી કૃત શ્રી વલ્લભાખ્યાન અને તેના ઉપરની પ્રાતઃ સ્મરણીય જે શ્રી રમણલાલજી મહારાજ શ્રી મથુરાની ટીકા સહિતનું પ્રકાશન ખરેખર અભિનંદનીય ગણાય. શ્રી વલ્લભાખ્યાન જેવા અજોડ ગ્રંથ ઉપર આપણે કૃપા પ્રસાદ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત પૂજ્ય શ્રી જેનું વિવરણ વૈષ્ણવોને શ્રી વલ્લભ એવં શ્રી વલ્લભ કુલ પરિવારમાં જરૂરથી ભાવવૃદ્ધિ કરાવશે. પ્રભુની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવા માટે શ્રી વલ્લભની પ્રસન્નતા અનિવાર્ય છે. શ્રી વલ્લભની પ્રસન્નતા માટે એમના પરિવારની, પરિકરની અને ભગવદીઓની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવી અનિવાર્ય છે. આજના સમયે જ્યારે આ રસ્તો આપણાથી ભૂલાઈ ગયો છે, ત્યારે પરમ કૃપાળ શ્રી ગુસાઈજીની કૃપાથી પ્રગટ થયેલું શ્રી વલ્લભાખ્યાન જ આપણને રસ્તો સુજાડી શકશે અને એ જ સમાધિ ભાષા રૂપવાણીને સમજવા માટે પરમ વંદનીય પ્રાતઃ સ્મરણીય પૂજ્ય શ્રી જેનું ટીકા સાહિત્ય દ્વારા આપશ્રીની કૃપાથી જ સમજાશે. આચાર્ય કુલમાં સૂર્ય સમાન ઉદયમાન યુવા આચાર્ય શ્રી અક્ષય કુમારજીએ પ્રકાશનમાં સંકલનની જે મહત્ ભૂમિકા અદા કરી છે, જે બદલ શત અભિનંદન સહ આશીષ. સાથે સાથે આ પ્રકાશનમાં દ્રવ્ય સહયોગ આપવા બદલ પરમ વૈષ્ણવ હરેન્દ્રભાઈ, પરમ વૈષ્ણવ લક્ષ્મીદાસ પાબારી વગેરે ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. આ સાહિત્ય સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા વૈષ્ણવોને નિઃશુલ્ક સાંપ્રદાયિક સાહિત્ય મળે અને વૈષ્ણવો આપણા પૂજ્ય આચાર્યની વાણી અને ભગવદીઓની વાણીની વધુ નજીક આવે, એમાં રુચિ લેતા થાય અને સાચી સમજણ પ્રાપ્ત કરે, એ જ મનોરથ કરેલો છે, જે શ્રી આચાર્ય ચરણના કૃપાબલથી જરૂર સિદ્ધ થશે. ગોસ્વામી શ્રી વસંત કુમારજી મહોદય શ્રી, ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ શ્રી. ગોસ્વામી શ્રી વિશાલ કુમારજી મહોદય, શ્રી માધવ પ્રભુ સાહિત્ય સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા શ્રી વલ્લભાખ્યાન શ્રી રમણ પ્રભુની ટીકા સહિત પ્રકાશિત થઈ રહ્યું છે, ત્યારે ખૂબ જ પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. આનંદનો વિષય છે. પુષ્ટિ માર્ગના ભાવ વૈભવને
અને પુષ્ટિ માર્ગમાં રહેલી દ્રઢ ગુરુ ભક્તિ તેમજ આચાર્ય ચરણોના અલૌકિક સ્વરૂપને ઉજાગર કરતો અને જેના કારણરૂપ શ્રી ગુસાઈજીનું ચર્વિત તાંબુલ છે તેવો પરમ રસાત્મક, ભાવાત્મક અને સ્વરૂપાત્મક ગ્રંથ શ્રી ગુસાઈજીની પ્રેરણાથી શ્રી ગોપાલદાસજી દ્વારા પ્રગટ થયેલ, જે અધ્યાવધિ પર્યંત લીલાના અધિકારી પુષ્ટિમાર્ગીય દૈવી જીવો માટે પુષ્ટિભાવનો અનુભવ કરવા માટેનો ઉત્તમ ગ્રંથ છે. આ અલૌકિક ગ્રંથના પ્રકાશનમાં જેમનું મુખ્ય યોગદાન છે તેવા સંકલન કરતા પરમ પ્રિય અનુજ શ્રી અક્ષય બાવાને હાર્દિક અભિનંદન અને શ્રી માધવ પ્રભુ સાહિત્ય સેવા ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓને અભિનંદન એવં શુભ આશીષ. આવા કાર્યો ભવિષ્યમાં પણ થતા રહે એવા શુભ આશીષ ગોસ્વામી શ્રી વિશાલ કુમારજી મહોદય, ટ્રસ્ટના ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોસ્વામી શ્રી અભિષેક કુમારજી મહોદય શ્રી. શુભ આશંસા શ્રી વલ્લભાખ્યાન જે શ્રી રમણલાલજી મહારાજ ટીકા સાથે પ્રકાશિત થઈ રહ્યું છે એ એક પ્રશંસનીય કાર્ય છે. સંપૂર્ણ પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ સમુદાય અને તદ અંતર્ગત શ્રી રમણ અનન્ય સુજાતિ સમાજ વિશેષતયા આ પ્રકાશનથી લાભાન્વિત થશે. આવું સુંદર ભાવાત્મક પ્રકાશન કરવા માટે ગ્રંથ સંકલન કરતા પ્રિય અનુજ એવા ચિરંજીવી ગોસ્વામી અક્ષય બાવા તથા પ્રકાશન કરતા દાદાભાઈ શ્રી ગોસ્વામી વસંતકુમારજી અને ગોસ્વામી શ્રી વિશાલ કુમારજીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ટ્રસ્ટીગણને આશીર્વાદ. આવા કાર્યો અવિરત થતા રહે એના માટે શ્રી વલ્લભના ચરણોમાં વિનંતી સાથે વિરમું છું. ગોસ્વામી શ્રી અભિષેક કુમારજી. હવે આ જેને સંકલન કર્યું છે એવા ગોસ્વામી શ્રી અક્ષય કુમારજી મહોદય શ્રી સંપાદક સાથે સંગોષ્ઠી, તે આપણે આવતા પાઠમાં જોઈશું. ત્યારબાદ વલ્લભાખ્યાન શરૂ થશે. જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. સાયં કુંજાલય સ્થાસનમુપવિલસત સ્વર્ણપાત્રં સુદોતમ રાજત્યજ્ઞોપવીतं પરિતનુવસनं ગૌરમં ભોજવક્त्रं પ્રાણાયાનાં યનાસાપુટનિહિતકરं કર્ણરાજદ્વિમુક્तं વંદેર્ધોન્મિલિતાક્ષ મૃગમદતિલકં વિઠ્ઠલેશં સુકેશમ. અત્યારે આપણે શ્રી ગુસાઈજીના પ્રાકટ્ય ઉત્સવની અગ્રિમ મંગલ વધાઈ સ્વરૂપે વલ્લભાખ્યાન લઈ રહ્યા છીએ. ગયા પાઠમાં આપણે વલ્લભકુલના બાળકોના આશીર્વચન જોયા હતા. હવે આપણે આ વલ્લભાખ્યાનનું જેને સંકલન કર્યું છે તેના વચનામૃત અને ત્યારબાદ વલ્લભાખ્યાન શરૂ થશે. ગોસ્વામી શ્રી અક્ષય કુમારજી મહોદય શ્રી સંપાદક સાથે સંગોષ્ઠી. હાલના સમયમાં આપણો સંપ્રદાય ઘણી વિકટ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. આપણા જીવનમાં ભૌતિકતા વધતી જાય છે. લૌકિક વધી જવાને કારણે અલૌકિકમાંથી વિશ્વાસ, નિષ્ઠા, ભાવ ઘટતા જાય છે. આવા સંજોગોમાં શરણાગતિના અંગોમાં કરિષ્યતિ તે વિશ્વાસ જે શ્રી આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે એ વિશ્વાસ જ ડગુમગુ થવા લાગે છે, જેના પરિણામ સ્વરૂપે આવા ઉત્તમ માર્ગમાં હોવા છતાં પણ આપણે ફલથી વિમુખ થઈ જઈએ છીએ. જેને ભક્ત કવિ શ્રી દયારામભાઈ આ શબ્દોમાં કહે છે, છતે સ્વામીએ સોહાગણીના સુખરે સ્વપ્ને ન દેખે એ રે. સ્વામી હોવા છતાં સોહાગણીનું સુખ માણી નથી શકતા. સ્વધર્મ પ્રત્યેની આપણી ઉદાસીનતા જ આનું કારણ છે, કેમ કે આપણા સ્વામીને આપણે ઓળખી નથી શક્યા. આવા સમયમાં આપણા ભાવમાં વૃદ્ધિ કરે, આપણો વિશ્વાસ દ્રઢ કરે એવા સાહિત્યની જરૂર છે. આપણા સર્વસ્વ એવા શ્રી આચાર્ય ચરણ, શ્રી પ્રભુ ચરણના સ્વરૂપને જાણવા માટે શ્રી વલ્લભાખ્યાન અતિ ઉત્તમ ગ્રંથ છે. જેને શ્રી વિઠ્ઠલનાથ વિચારે રે તે
તેને પ્રગટ પદાર્થ ચારે રે, તેને કાલ કર્મ નવ બાંધે રે, યમતે શિર ધનુષ ન સાધે રે. એવા ગુણ નિધિનાથ ગાતા બ્રહ્મ હત્યાદિક અઘટરે. આજના યુગમાં વધતી જતી ભૌતિકતાના કારણે અશાંત થયેલા જીવોને અલૌકિક શાંતિ આપનારી નવાખ્યાનની આ કડીઓ છે. આપણો વિશ્વાસ દ્રઢ કરનારી છે. નવાખ્યાનમાં પદે પદે શ્રી ગોપાલદાસજીએ આવો વિશ્વાસ સંપાદિત કર્યો છે. જ્યારે સાક્ષાત નિકુંજનાયક સ્વરૂપ એવા શ્રી ગુસાઈજી આપણી માથે બિરાજે છે, પછી ચિંતા કરવાની શી જરૂર છે? આજે જોઈ શકીએ છીએ કે નવાખ્યાન તો ઘણા વૈષ્ણવોના નિત્ય નિયમમાં હોય છે, પણ તેના ભાવથી અજાણ હોવાને કારણે તે તેનો આનંદ માણી શકતા નથી. શ્રી ગુસાઈજીની કૃપાથી ગોપાલદાસજીની વાણી સ્ફુરી અને આ નવાખ્યાન ગાયા. એટલા માટે આ અલૌકિક વાણી છે, અને આવી અલૌકિક વાણી આપણી લૌકિક બુદ્ધિથી ન સમજાય. આ તો મહદની કૃપા થાય ત્યારે જ સમજાય. જેમ શ્રી આચાર્ય ચરણ નિરજ લક્ષણમાં આજ્ઞા કરે છે કે મહતામ કૃપયા યાવત ભગવાન દયયષ્યતિ. મહદ એટલે કે ભગવદીની કૃપાથી જ પ્રભુ પ્રાપ્તિ થાય છે, અને અલૌકિક વાણી પણ મહદની કૃપાથી જ સમજાય. આપણા મહાનુભાવ પૂર્વાચાર્યોની ટીકાના આધારે જ આ અલૌકિક વાણીને સમજી શકીશું. એટલા માટે આ નવાખ્યાન પર અમારા પ્રપિતામહ જે શ્રી રમણલાલજી મહારાજ શ્રી મથુરા દ્વારા નિજજન દાસની છાપથી વ્રજભાષા ટીકા કરેલ છે, તે સાથે પ્રકાશિત કરીએ છીએ. આ ટીકાની હસ્તપ્રત અમારા તાજચરણ નિત્યલીલા પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી માધવરાયજી મહારાજ શ્રીના સંગ્રહમાંથી પ્રાપ્ત થઈ, જે આજે જેના અનુગ્રહથી શ્રી માધવ પ્રભુ સાહિત્ય સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવી રહી છે. એ બદલ ખૂબ જ આનંદ અનુભવું છું. આ ગ્રંથના સંપાદન કાર્યમાં મારા ત્રણેય ભ્રાતાઓ શ્રી વસંત કુમારજી, શ્રી વિશાલ કુમારજી, શ્રી અભિષેક કુમારજીનો ખૂબ જ સહયોગ મળ્યો છે, અને આવો અનુગ્રહ અવિરત રહે એવી કામના કરું છું. જે શ્રી રમણલાલજી મહારાજ શ્રીની ટીકા અત્યંત ભાવવાહી શૈલીમાં છે, જે વાંચવા વાળાને ખ્યાલ આવશે. સાથે સાથે દરેક આખ્યાનના અંતમાં આપ શ્રી લખે છે શ્રી ગોપાલદાસ તીનકે દાસાનો દાસ. એનાથી આપને દીનતાના દર્શન થાય છે. આવા મહાનુભાવ આચાર્યની કૃપાથી આ નવાખ્યાનના ખરા ભાવને સમજશું તો તે ભાવનું ભાવન કરતા આપણે આના આનંદને માણી શકીશું. આજની ભાગદોડની જિંદગીમાં સતત માનસિક ત્રાસમાં રહેતા ને અલૌકિક શાંતિ આપનારા છે આ નવાખ્યાન. લૌકિક વાતાવરણના કારણે ડગુમગુ થતા વિશ્વાસને નવો ચાર્જ આપનારા છે આ નવાખ્યાન. એટલા માટે આજના ભૌતિક યુગમાં પણ જો હૃદયના ભાવ સાથે આ નવાખ્યાનનું ગાન, પાન અને ધ્યાન કરવામાં આવે તો અલૌકિક જીવનમાં પણ અલૌકિક આનંદ પ્રાપ્ત થશે. અહીં વૈષ્ણવોને સરળતા રહે તે માટે વ્રજભાષા ટીકાની ગુજરાતી લિપિ જ રાખી છે, જેથી દરેક જિજ્ઞાસુ વૈષ્ણવ સરળતાથી સમજી શકે અને આ ટીકાનો આનંદ માણી શકે, અને એ હૃદયના ભાવ સાથે પુષ્ટિ પથ પર અગ્રેસર થાય. શ્રી વલ્લભની કૃપા સદાય બની રહે. ગોસ્વામી શ્રી અક્ષય કુમાર જી મહોદય શ્રી. હવે આપણે વલ્લભાખ્યાન ટીકા શરૂ કરી રહ્યા છીએ. અનન્ય શિરોમણી ગોસ્વામી જે શ્રી રમણલાલજી મહારાજ નિજજન દાસ કૃત શ્રી વલ્લભાખ્યાન ટીકા. ચિંતા સંતાન હંતારો યત પાદાંબુજરેણવઃ સ્વીયાનામ તાનિ ચાચાર્યાન પ્રણમામિ મુહુર્મુહુઃ યદનુગ્રહતો જંતુઃ સર્વદુઃખાતિગો ભવેત તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ वल्लभनंदनम। यह ग्रंथ को नाम श्री वल्लभाख्यान है। ताको आशय यह है जो वल्लभ नाम प्रिय को है।
आख्यान कथा जामे ऐसो जो ग्रंथ ताको नाम श्री वल्लभ आख्यान, अथवा जैसे लौकिक में जाको प्रिय है सो भले ही गुण करके रहित हो है, परंतु स्नेही के जाने तो अपनो प्रिय सर्वोत्कृष्ट सर्वगुण संपन्न है, तैसे यहाँ अलौकिक पुष्टि मार्ग में नहीं है। ताते गोपालदास जी अपने प्रिय जो श्री गुसाई जी तिनको स्वरूप गुण लीला प्रसिद्ध करवे के लिए ये ग्रंथ प्रकट कियो है। जो ये मेरो प्रिय कछु साधारण नहीं है, मैं ही कछु बड़ाई नहीं करू हूँ। मेरी कहा सामर्थ्य है, श्रुतिन करी के अगम्य है, सर्वातीत है, परस्पर मूल स्वरूप भावात्मक विप्रयोग अग्नि वस्तुतः कृष्ण श्री वृंदावन चंद्र है। तैसे ही प्रभु श्री महाप्रभु जी के घर प्रकट भये हैं। ऐसे जो श्री गुसाई जी श्री विठलनाथ जी मेरे प्राण प्रेष्ठ हैं, सो मेरे प्रिय जानी के कछु में ही बड़ाई नहीं करू हूँ। ये स्वरूप सर्वोत्कृष्ट है, ये अभिप्राय पूर्वक कहे हैं। ताते है सब प्रिय को प्रसिद्ध स्वरूप जामे। ताते यह ग्रंथ को नाम वल्लभ आख्यान है। यह ग्रंथ में 9 कड़वा ही है, ताको कहा कारण है। तत्राहु जो अंकन की गणना 9ताई है, ताते 9 को अंक पूर्ण है, तैसे ही श्री गुसाई जी को स्वरूप परिपूर्ण है। 3 को है स्वरूप गुण लीला वर्णन जामे। ऐसो जो वल्लभ आख्यान ताहु में 9 कड़वा है, अथवा जैसे 9 रस है, तैसे ही एक एक रस रूप ये 9 कड़वा है। पेलू तहा प्रथम आख्यान तो श्रवण भक्ति रूप है। या के श्रवण करे ते पुष्टि मार्गीय श्रवण भक्ति प्राप्त होय है। એટલે પ્રથમ આખ્યાનનું ગાન કરવાથી શ્રવણ કરવાથી આપણને શ્રવણ ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે। બીજું और द्वितीय आख्यान के पाठ करे ते श्रवण करे ते कीर्तन भक्ति सिद्ध होय है। याही ते ये कीर्तन भक्ति रूप है। गाय श्रुति गुण रूप हर्निश धरे ध्यान विचार इत्यादि तुकन में वर्णन कियो है। એટલે આ બીજા વલ્લભ આખ્યાનમાં આ તુક આવે છે, એટલે આ કીર્તન ભક્તિનું સૂચન કરે છે। એટલે બીજા વલ્લભ આખ્યાનના ગાન દ્વારા આપણે કીર્તન ભક્તિ મેળવી શકીએ છીએ। ત્રીજું और तृतीय आख्यान स्मरण भक्ति रूप है। क्यों? जो गोपालदास जी ने श्री गुसाई जी के प्रादुर्भाव उत्सव को विधि पूर्वक वर्णन कियो है। એટલે આ ત્રીજું આખ્યાન છે એ સ્મરણ ભક્તિનું સૂચન કરે છે। શા માટે? તો તેમાં ગોપાલદાસજીએ શ્રી ગુસાઈજીના પ્રાદુર્ભાવ ઉત્સવની વિધિપૂર્વક વર્ણન કર્યું છે, એટલે તે સ્મરણ ભક્તિ તેના દ્વારા સિદ્ધ થાય છે। ચોથું और चतुर्थ आख्यान वंदन भक्ति रूप है। ताही ते एक एक तुक के अंत में ते पद वंदु श्री वल्लभ नंद ये पद आवे हैं, और आदि समय हूँ ते ही पद है। ते पद वंदु श्री वल्लभ नंद इत्यादि वर्णन कियो है। और पंचम आख्यान अर्चन भक्ति रूप है। क्यों? जो या में स्वरूप गुण महात्म्य लीला युक्त श्री गोसाई जी के स्वरूप को उत्कर्ष है। और षष्ठम आख्यान में पाद सेवन ध्यान रूपासक्ति है। रूप सुधार समाधुरी ते लोचन भरी भरी पीजे जी। रूप सुधार समाधुरी ते लोचन भरी भरी पीजे जी। आम अही छठा आख्यान में पाद सेवन ध्यान रूप आसक्ति छे। सातमो और सप्तम आख्यान में दास्य दास स्वरूप भक्ति है। आप सेवा करी शिखवे श्री हरि भक्ति पथ वैभव सुदृढ़ कीधो इत्यादि तुकन में वर्णन कियो है। आठवां और अष्टम आख्यान में सख्य रूपा भक्ति है। भक्त जनना कोड पूरिया
इत्यादि तुकन में वर्णन कियो है। और नवम आख्यान में आत्मनिवेदन रूपा भक्ति है। क्यों? जो पुष्टि मार्गीय साधन और फल ये दो निरूपण किए हैं। जो वल्लभ नो परिवार रे नित्य प्रति क्षणु क्षणु समारिये रे श्री वल्लभ नो परिवार रे रसना। श्री गिरिधरादिक आत्मनिवेदन कराइवे वारे हैं और श्री विठलनाथ जी के विषय आत्मनिवेदन कर्तव्य है, ये सूचना करी। एहुना चरण स्मरण करी श्री विठ्ठल पद रजरती मागरे रसना इत्यादि वाक्यन करी के ये निरूपण कियो है। ताते ये नव आख्यान नवधा भक्ति रूप है। सो वस्तुतः तो एक एक आख्यान में नवधा भक्ति है, परंतु 8 गुप्त है और एक भक्ति प्रगट है। ताते ही नव कड़वा है। और अथवा नवाख्यान पुष्टि मार्गीय नवनिधि रूप है, जहाँ एक निधि की जो संपत्ति प्राप्त हो जाए तो दरिद्रता तो दूर होए, संपूर्ण सुख प्राप्त होए। और यहाँ तो अलौकिक संपत्ति युक्त नवनिधि रूप ये नव कड़वा है। अथवा खट धर्म और द्वय धर्म संयोग विप्रयोगात्मक रूप और प्रेम लक्षणा भक्ति ये एक एक कड़वा है। अथवा श्री वल्लभाख्यान के प्रादुर्भाव करिवे को हेतु कहा है, ये शंका करी के समाधान करे हैं। जो रसात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम नंदनंदन श्री कृष्ण के स्वरूप के प्रतिपादक तो श्री भागवतादिक पुराण भक्ति शास्त्र बहुत है। और श्री महाप्रभु जी के स्वरूप के प्रतिपादक श्रीमद प्रभु चरणोक्त श्री सर्वोत्तम स्तोत्र, श्री वल्लभाष्टक, सप्त श्लोकी इत्यादि और श्री हरिराय चरणोक्त वो अनेकन ग्रंथ है। और श्री गुसाई जी के स्वरूप के प्रतिपादक ग्रंथ विशेष नहीं है। केवल श्री रघुनाथ प्रभु करुणाधीशोक्त श्री नाम रत्नाख्य स्तोत्र है, परंतु जीवन को श्री गुसाई जी के स्वरूप को ज्ञान यत्किंचित हूँ नहीं है। ताते आपके विचारे भये जे निसाधन महापतित अधम स्वरूप ज्ञान शून्य जीव तिनके ऊपर असाधारण कृपा करवे के अर्थ ये श्री वल्लभाख्यान ग्रंथ श्री विठलाधीश प्रभु ने स्वकीय परम अंतरंग भक्त श्री गोपाल दास जी तिनके अंतःकरण द्वारा प्रकट कियो है। यद्यपि स्वरूप महात्म्य बोधार्थ प्रकारांतर प्रवाही मर्यादा महात्म्य पुष्टि ये 4 प्रकार की आज्ञा करी ही, परंतु तो हूँ परम स्वतंत्र महा अनिर्वचनीय रसमय विप्रयोग अग्नि पुष्टि पुष्टि स्वरूप प्रकाशार्थ ये पुष्ट आज्ञा श्री वल्लभाख्यान में करी है। एक प्रवाही आज्ञा तो पंढरपुरस्थ भगवान श्री विठलनाथ जी के भीतर स्पर्श योग में स्थित होय के करी, जो हूँ नंदन तमे तात। दूसरा और मर्यादा आज्ञा हो लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम के भीतर स्पर्श योग में स्थित होय के ब्रह्मांड पुराण में करी है। तदा हम वल्लभ कुले द्विजाचार रते अमले अवतीर्य परम रूपम दर्शयिष्ये मनोहरम इत्यादि वाक्यन में निरूपण कियो है। त्रीजो और महात्म्य युक्त आज्ञा श्री गोवर्धन धरण रूप सो श्री महाप्रभु जी के प्रति करी, वाक अधिष्ठातृ स्वरूप करी के ये आज्ञा करी, जो मैं आपके घर प्रकट होऊंगो। चौथू और चौथी पुष्टि आज्ञा तो श्री गुसाई जी ने साक्षात अपने ही श्री मुखाम्बुज सो करी है। श्री सर्वोत्तम स्तोत्र में ये 4 आज्ञा तो करी, परंतु इन आज्ञान में जीवन को अपने अज्ञानता ते भ्रम उत्पादन होय है, जो ये कौन स्वरूप प्रकट है। यद्यपि अंतर्गत में विचार करी के
ये आज्ञा तो चारों ठिकाने आज्ञा करवे वारे तो एक ही है, परंतु ये बात तो निगूढ़ है। ताते स्वतंत्र स्वरूप बोधन अर्थ परात्पर पुष्ट पुष्टि अति स्पष्ट आज्ञा पांचवी अंतरंग भक्त श्री गोपालदास जी के हृदय में विराज के स्वयं श्री विठलाधीश प्रभु चरण ने ही आज्ञा करी है। पेलू आ चंद श्री वृंदावन ताणो प्रगटियो, बीजू नवरंग नागर प्रगटिया, त्रीजू आ समान रूपे निरखता कोई नहीं, चौथू आ जगदीश श्री वल्लभ गृहे प्रगटिया, पांचमू युवती युथ बहु माहे श्रीजी सांवल वर्ण सुहाय, एणी पेरे श्री गुसाई जी ने जाणो रे जाणी अहरनी सगाई वखाणो रे, छठू श्री विठ्ठल द्विज रूप तमारी लीला एणी पेरे जाजी जी, सातमू ए चरण शरण विना लोक दश चारमा कहो ने केनो काई अर्थ सीधो, आठमू नंद नंदन रूपे रास लीला करी, नवमू न कोई हुओ न होया ए रूप सम, दसमू रूप बेउ एक ते भिन्न थई विस्तरे, 11मू 14 लोकमा वर्ते जेनी आण, 12मू एहू न ते चरण स्मरण करी श्री विठ्ठल पद रजरती मागरे रसना, 13मू श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा, 14मू तेने हेते आपोपे प्रगट्या श्री वल्लभ राजकुमार इत्यादि वाक्यन में स्वतंत्र रूप वर्णन कियो है। ये पांचमी आज्ञा परम फल रूप है। અહીં અત્યારે જે બધા વાક્ય કહેવામાં આવ્યા તે વલ્લભાખ્યાનની તૂક છે। એમાં સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવ્યું છે કે શ્રી ગુસાઈજી છે તે શ્રીનાથજી જ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જ છે। આ વાત શ્રી ગુસાઈજીએ ગોપાલદાસજીના હૃદયમાં પધારીને આપણા ભક્તોને દર્શાવી છે। अब यहाँ एक शंका है, जो यह में 3 प्रकार की वाणी है, ताको उत्तर ये है जो ये आख्यान परम फल रूप है। तो जो एक ही प्रकार की वाणी होय तो अर्थ समझावे में शीघ्र ही आई जाए, या के अधिकारी जन थोड़े हैं ताते अर्थ गोपनार्थ 3 प्रकार के पद राखे हैं। अब ये श्री वल्लभाख्यान प्रादुर्भाव भयो 100 प्रकार लिखित हैं। एक समय श्री गुसाईजी राजनगर पधारे, सो भाईला कोठारी के घर बिराजे हैं। तहाँ भाईला कोठारी के जमाई गोपालदास जी दर्शन करवे को आए, सो ये मुख हते। तब आपने पूछी जो ये कौन है? तब भाईला कोठारी ने विनती करी, जो कृपा सिंधु ये गोमती को वर है। तब आपने आज्ञा करी, जो गोमती को वर तो सागर चाहिए। तब भाईला कोठारी ने विनती करी, जो ये मूक है इनसे बोलियो नहीं जात है, आप कृपा करोगे तब यह बोलेंगे। यह सुनी के श्री गुसाई जी ने अति प्रसन्न होय के स्वर अधरामृत तांबूल उगार श्री गोपालदास जी को दियो। गुह्य अति गुह्यतम स्व सिद्धांत प्रकाशार्थ गोपालदास जी के हृदय में बिराजी के स्वयं आपने ही आज्ञा करी। ताहिते ये वल्लभाख्यान स्वतः सिद्ध आपू ही प्रमाण है। एतन मार्गीय सिद्धांत ग्रंथन को सबन को प्रमाण वल्लभाख्यान है, और जब वल्लभाख्यान के प्रमाण को नहीं माने ताको एतन मार्ग ते बहिष्कृत जाननो। और पुष्टि मार्ग में अन्य मार्गीय मायावादीन के प्रमाण के लिए तो वेद पुराण राखे हैं, और पुष्टि मार्गीय जीवन के प्रमाण के लिए ये वल्लभाख्यान राख्यो है, क्योंकि वेद पुराण ये सब परोक्षवाद विषय है, और ये वल्लभाख्यान तो श्री विठलेश प्रभु जी की भगवदियन की साक्षात वाणी है। पुष्ट पुष्ट है, रस रूप है, महाफल रूप है। वेद में तो 4000 उपनिषद मुख्य रसात्मक को गुण लीला वर्णन करे हैं, ताते ये सर्वाधिक मुख्य ग्रंथ है। ताको पाठ और अर्थ को विचार पुष्टि मार्गीय जीवन को अवश्य ही कर्तव्य है। ये वल्लभाख्यान श्री गुसाई जी ने परम भगवदीय जो गोपालदास 3 द्वारा प्रकट कियो है।
परंतु आपकी वाणी है, ताको कछु और हो चिन्ह है, या शंका को समाधान, या रीति सो जो नौ आख्यान में समस्त परिवार को नाम है। परंतु स्वामिनी जी, श्री रुक्मिणी जी, द्वितीय स्वामिनी श्री पद्मावती जी और आपके भतीजा श्री पुरुषोत्तम जी, इनको नाम स्पष्ट नहीं कहियो है, गुप्त रीति सो कहियो है। ताते ये निश्चय ही है कि ये वाणी आपकी है। सो जहा समय श्री गुसाई जी ने अपनो प्रसादी तांबुल को उगाड़ दीनो, ताही समय गोपालदास जी केदारा राग में प्रथम आख्यान गान करत भय। केदार राग रात्रि के समय अति प्रिय लगत है और निकुंज वैभव में तो शरद की रात्रि अखंड है। ताते ये केदारो राग श्रीमद विठलेश्वर प्रभु चरण को अत्यंत प्रिय है और श्री स्वामिनी आदि समस्त भक्तन को हो प्रिय है। ताते प्रथम आख्यान केदारे में कीनो। प्रथम आख्यान राग केदार। अब गोपालदास जी श्री गुसाई जी सो विज्ञप्ति करे हैं। वंदु श्री विठल वर सुंदर नवघन श्याम तमार, जगती तल उद्धार करवा प्रगट्या परम दयाल। श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा लीला द्विज तनुधारी, 7 दिवस गिरिवर कर धार्यो वासव वृष्टि निवारी। એટલે હવે અહીં વલ્લભાખ્યાનું વિવેચન શરૂ થાય છે, તે આપણે આવતા પાઠમાં લઈશું। આમ આપણે અહીં વલ્લભાખ્યાનનો પ્રાદુર્ભાવ કઈ રીતે થયો, 9 આખ્યાનમાં 9 આખ્યાન શા માટે છે, તેનો શું ગૂઢ ભાવ છે, 9નો અંક શા માટે લેવામાં આવ્યો છે, તે બધા ગૂઢ ભાવો આપણે અહીં જોયા। આમ હરિગુરુ વૈષ્ણવની કૃપાથી આપણે આ વલ્લભાખ્યાન પ્રાપ્ત થયું છે, તો આપણે તે યશોગાન કરવું જોઈએ। અને આપણે આમાં જાણ્યું કે આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રમાણ ગ્રંથ તરીકે આપણે આ વલ્લભાખ્યાનને જોવાનું છે કે આપણે કંઈ પણ શંકા થાય તો આપણે આ વલ્લભાખ્યાન જોઈએ તો આપણને ખ્યાલ આવે। આપણે નિત્ય નિયમમાં વલ્લભાખ્યાન કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ જો તેના ગૂઢ ભાવોને જાણીએ તો વધારે આનંદ આવે। અહીં ગોસ્વામી શ્રી રમણલાલજી મહારાજ કહી જ રહ્યા છે કે અહીં નિકુંજ લીલાનું વર્ણન છે, એટલે જ આ પ્રથમ આખ્યાન રાગ કેદારામાં ગાવામાં આવ્યું છે। માટે પ્રથમ આખ્યાનની શરૂઆત આપણે આવતા પાઠથી કરીશું। જય શ્રી કૃષ્ણ। ચિંતા સંતાન હંતારો યત પાદાંબુજ રેણવઃ સ્વીયાનાં તાનિજાચાર્યાન પ્રણમામિ મુહુર્મુહુઃ। યદનો ગ્રહતો જંતોઃ સર્વદુઃખાતિગો ભવેत् તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભનંદનમ। પ્રભુ નંદ કુમારો મે સ્વામીની વૃષભાનુજા, કૃતાર્થોહમ 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 ન સંશયઃ। સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે આપણે વલ્લભાખ્યાન પહેલું ટીકા સહિત જોઈશું। ગયા પાઠમાં આપણે 9 અંકનું શું મહાત્મ્ય છે, 9 વલ્લભાખ્યાન શા માટે છે, તે બધું વિસ્તારથી જોયું હતું।
અને વલ્લભાખ્યાનમાં આવતી પંક્તિઓ કે જેમાં શ્રી ગુસાઈજી પોતે જ સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે તેનો સંકેત આપેલો છે તેવા આપણે વાક્યો જોયા હતા કે જેનો સમાવેશ વલ્લભાખ્યાનમાં થાય છે। હવે આજે આપણે પ્રથમ આખ્યાન શરૂ કરીશું। वल्लभाख्यान पहलू प्रथम आख्यान राग केदार। अब गोपालदास जी श्री गुसाई जी सो विज्ञप्ति करे है। वंदु श्री विठ्ठल वर सुंदर नवघन श्याम तमाल जगती तल उद्धार करवा प्रगट्या परम दयाल। वंदु श्री विठ्ठल वर सुंदर नवघन श्याम तमाल जगती तल उद्धार करवा प्रगट्या परम दयाल। हे विठ्ठलाधीश आप पूर्ण पुरुषोत्तम छो। हे विठ्ठलाधीश आप पूर्ण पुरुषोत्तम हो, आपको मैं वंदन नमन करत हूँ। श्री विठ्ठल शब्द को अर्थ विद सो ज्ञान, आपके स्वरूप को अथवा लीला गुण को ज्ञान ता करके सहित जो ठ नाम शून्य या को भावार्थ जो अज्ञानी जीवन को ल या पद करके ग्रहण अंगीकार करे हैं ते विठ्ठल कहिए। और श्री मुख्य श्री स्वामिनी जी, रुक्मिणी जी, पद्मावती जी तीन करी के युक्त अथवा श्री शोभा ता करी के युक्त तीन को विठ्ठल कहिए। जो निसाधन जन हित करता तीन को नमन मात्र ही कर्तव्य है। अब प्रभु चरण को प्रीति पूर्वक वंदन करें ते साक्षात निज रूप लीला की स्फूर्ति भई सो ही स्वरूप वर्णन कहे हैं। सुंदर जो मदन विधियों इत्यादि तीन ते अति उत्तम है। आपके दर्शन करके कोटि मदन कोटि कोटि चंद्र मूर्छित होत है। अथवा सुंदर जो श्री रुक्मिणी जी, श्री पद्मावती जी तीन के वर अनन्य स्वामी अथवा सुंदर जो मुख्य गोपी तीन के वर प्राण प्रिय अथवा सुंदर जो निज भक्त तीन को वरवे योग्य याही अभिप्राय ते कह्यो है जो सुंदर वर। અહીં સુંદર ના ઘણા બધા સંકેત આપેલા છે। और आप कैसे हो? नवघन श्याम तमाल 909 तन घन सो प्रवाल पुष्प फलादिकन करिके गहवर वन। श्याम गहवर श्याम तमाल को वृक्ष। जैसे आप श्याम सुंदर हो, अत्यंत रस करिके परिपूर्ण श्री अंग है, ताते जैसे कोई मनुष्य श्याम तमाल के वृक्ष को आश्रय ले ताको ताप दूर होए, तैसे ही जीव आपको आश्रय ले ताके कोटा न कोटि जन्म के पाप ताप दूरी होए। और श्याम तमाल के वृक्ष के आश्रय ते अनेक लता पुष्प पत्र द्रुम फलादिक प्रफुल्लित होए है। तैसे यहाँ आपके आश्रय सो स्नेह रूप जो लता, प्रेम रूप पत्र, आसक्ति रूप पुष्प, व्यसन रूप फल प्रफुल्लित होते हैं। और जैसे श्याम तमाल ते अनेक पक्षी सुख पावत है, तैसे यहाँ अनेक दैवी जीव परम सुख पावत है। अथवा श्याम शब्द को मध्यमणि न्याय करके दोय आदि संबंध है, ताते जैसे घन सजलता करके श्याम की झलक दिसे है, तैसे ही आप हो नवघन श्याम स्वरूप है, जैसे घन प्रभा करके युक्त है। जैसे घन प्रभा करी के युक्त है, ताप को निवारण करे है,
जल वृष्टि करत है। कोकिला चातक मोर इत्यादि कन को सुख देत है। दादुर प्रभृतिन को हु सुख देत है और भूमि को सिंची के गीली करत है। तड़ित करी के इंद्रधनुष बग पंक्तिन करी के संयुक्त है और जब घन बरखनहार होत है तब पूर्ण उष्णता करे है, पाछे जल की वर्षा करे है। तैसे ही नवघन श्याम स्वरूप श्री विठलेश प्रभु जो है ते भवसागर उष्णता निवृत्त करे है। परम स्नेहात्मक वचनामृत रूप रस की वर्षा करे है। चातक तलक जो निसाधन भक्त तिनको परम सुख देते हैं और भूव रूप को भक्तन को हृदय ताको स्वामृत सो अति आर्द्र करे है। घन तो तड़ित करी के युक्त है और आप श्री रुक्मिणी जी श्री पद्मावती जी तीन करी के युक्त है। आप निज गोपी जन करी के शोभित है। घन तो धनुष करी के शोभित है। आप पचरंग काछनी धारण करे हैं। पूर्व तो आप स्वदर्शन स्पर्शन हास्य विनोद वचनामृत रूप आरती चाह उत्पन्न करे हैं। पाछे सकल मनोरथ पूर्ण करे हैं। ये दो उपमान करी के असंख्यात भाव जताए हैं। अब इत्यादि कण गुण करी के विशिष्ट जो श्री वल्लभाधीश श्री विठलाधीश तिनको प्रादुर्भाव को निमित्त अर्धतुक करी के निरूपण करत है। जगती तल उद्धार करवा प्रगटिया परम दयाल। जगती जो भूवि पृथ्वी ताके तल विषय जेनी साधन भक्त तिनके उद्धार के लिए आप प्रादुर्भाव भय है अथवा या पृथ्वी को हो उद्धार कियो। अब जैसे सारस्वत कल्प में श्री नंदराय जी के घर में रसात्मक रमण प्रेष्ठ अक्षरातीत भगवान लोक वेद में अप्रसिद्ध पुरुषोत्तम श्रुतिन की प्रार्थना सो प्रकट है, तैसे श्री विठलाधीश प्रभु कोई प्रार्थना ते नहीं प्रकटे हैं। स्वकीयन के ऊपर निरुपाधिक करुणा ताते स्वयं ही प्रकटे हैं। काहे ते जो श्री गुसाई जी परम दयाल है, अतिशय दया करी के दया के सागर है। अब आपने कोई स्वरूप की आज्ञा सो जीवन को भूतल ते उद्धार कियो होएगो या शंका दूरी करे हैं। श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा लीला द्विज तनुधारी। 7 दिवस गिरिवर कर धार्यो वासव वृष्टि निवारी। जैसे श्री यानी श्री रुक्मिणी जी श्री पद्मावती जी तीन करी के सहित जे पुरुषोत्तम विप्रयोगात्मक परमानंद विग्रह श्री विठलेश स्वतंत्र स्वच्छंद ही क्रीड़ा रासलीला रूप तीन के करता है। तीन ने केवल लीलार्थ ही धारण किए हैं। द्विज जे विप्र तीन जैसी देव जिनने अथवा लीला जो श्री आदि वृंदावन में रासलीला तामे द्विज जो चंद्रमा सोही तन धारण रखते हैं। या को भावार्थ जो आप श्री वृंदावन चंद्र है, अब ये श्री विठल अवतार में निज इच्छा करी के या पृथ्वी को और अनेक जीवन को निस्तार कियो और निज भक्तन को निर्भय करे। तैसे ही पूर्व श्री नंदराज कुमार रूप करी के श्री गिरिराज धारण आदि लीला करी भक्तन की रक्षा करी सोही अर्थ तुक करी के निरूपण करे है। 7 दिवस गिरिवर कर धार्यो वासव वृष्टि निवारी जी। 7 दिवस पर्यंत गिरिराज ते पर्वत तीन में जो वर जो श्रेष्ठ श्री हरिदास वर्य तीन को कर जो वाम भुजा पे धारण कियो ताते वासव जो सुरेश इंद्र ताकि वृष्टि जो वर्षा को निवारण कियो ब्रजवासीन की रक्षा करी। ते प्रगट्यानु कारण कहिए जो सुरता मन आणो।
करो कृपा हूँ करो विनंती पोतानो करी जानो जी। ते वे जिनको पूर्व निरूपण किए ऐसे श्री विठलाधीश प्रभु या भूतल पे मनुष्य देह धारण करके प्रकटे हैं, ताते अज्ञानी जीवन को पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को ज्ञान नहीं है। ताते आपको नित्य लीला में जो मूल स्वरूप है ताको आदि कारण कहे हैं। सो वे श्रोता भक्त श्रवणोत्सुक तुम अपने मन में धारण करो। करो कृपा हूँ करो विनंती पोतानो करी जानो जी। मेरे ऊपर विठलाधीश कृपा करो तो मैं विनती करूं। आप मोको अपने स्वकीय करके जाने। यद्यपि प्रेरणा करता तो श्री गुसाई जी है, परंतु भक्तन द्वारा आप आज्ञा करे हैं। ताते श्री गोपाल दास जी अपने विषय दीनता बोधन करके यह सूचन कियो, जो श्री गुसाई जी के कृपा ते ही सर्व कार्य की योग्यता आवे है। अब सबंते परत्व बोध करे हैं। व्यापक रूप अद्वैत ब्रह्म जे तेजोमय कहवाय। आर्य पंथ अधिकारी मुनि जन ते माहे लय थाय जी। ब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म सो ही संपूर्ण जगत में व्यापक है। ताही ते व्यापक रूप है और अद्वैत है। तामे व्याप्त होए है सो वे ही पदार्थ है। अंश अंश करके और व्याप्त रूप है तो मूल है, और रूप पद करके निराकारत्व निवारण कियो। और कैसो है जो तेजोमय, तेज को पुंज है, ज्योति रूप कहवाए। यानी कहिए ऐसो जो अक्षर ब्रह्म आध्यात्मिक मर्यादा पुरुषोत्तम जाको निरूपण कियो ताकि प्राप्ति को साधन कहत है। आर्य पंथ जो वेद पद मार्ग, ऐसो मर्यादा मार्ग निष्काम कर्म मार्ग ताके अधिकारी मुनिजन ते यज्ञादि करके अक्षर ब्रह्म में लय हुए हैं। अक्षर आदि अखंड अनुपमा उपमा कही न जाय जी। अस्ति वस्तु सबको मणि बोले निगम नेति नेति गाय जी। अब पूर्ण जाको निरूपण कियो ताहि सो निर्विशेषवादी पूर्ण ब्रह्म कहे हैं। अतएव याहि ते वे भ्रांत है, अज्ञानी है। तो ये ब्रह्म कहाँ पदार्थ है या शंका को निवारण करे है। अक्षर कोई काल में हो या को क्षय न होए, ऐसो अक्षर ब्रह्म है और आदि सो सर्व पदार्थन्ते ये पूर्व है, मूल कारण है। सो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति या सो है। अब सब जगत की उत्पत्ति या में सो भई, ताते इतनो पदार्थ या में सो नष्ट होई गयो या शंका को निवारण करे हैं। अखंड सर्वकाल में एक सो रहे, नहीं तो कोई अंश ते न्यून होय और कोई अंश ते अधिक होय। और वो कहे हैं और अनुपम है, उपमा कौन की देनी जाए। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति या ही सो है। और खट नारायण हो अक्षरात्मक है, ताते तद्रूप ही है। और चौथो व्यूह भी अक्षरात्मक है। श्री सुबोधिनी जी में श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है, जो देवकी के 7वें गर्भ में धर्म के स्थानभूत अक्षरात्मक संकर्षण व्यूह है। और श्री गोकुलाधीश चरण ने हो यही आज्ञा करी है। वस्तुतः चतुर्व्यूह गोविंद की कला है, आध्यात्मिक है। और 24 अवतार तो नारायण में ते होए है। और चारियों वेद है तेहु अक्षरात्मक है, ताते तद्रूप ही है। इनकी उपमा कहा देवी में आवे।
और लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम तो याते उत्तम है, ये गीता में कह्यो है। यस्मात् क्षरमति तो अहम क्षरादपि च उत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। और पूर्ण पुरुषोत्तम तो इनते हूँ परे है, श्रेष्ठ है। अक्षरात् परतः परः उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम अन्य है। श्रृंगार रस द्विदलात्मक पुरुष है। पार्थ, हे अर्जुन, पुरुष परब्रह्म व्रजाधिप श्री गोकुल के अनन्य स्वामी है। ते तो परे हैं, तासो या अक्षर ब्रह्म की उपमा कही न जाए। ऐसे अक्षर ब्रह्म के रूप को हो यथार्थ ज्ञान कोई को नहीं है। अस्ति वस्तु सहु को मड़ी बोले, माइक मतवादी पंडित सबरे मिली के ये कहे हैं। जो श्री रामानुजाचार्य साकार प्रतिपादन करी के उपासना करे हैं और श्री माधवहु साकारवादी है, परंतु कालात्मक वासुदेव कृष्ण और रामचंद्र रूप करी के अक्षर ब्रह्म की उपासना करे हैं। और श्री निम्बार कहू साकारवादी है, सो गोपाल रूप करी के अक्षर ब्रह्म की उपासना करे है। सबन की गात यहाँ ताई है। हमारे इष्ट अक्षर ते परे हैं और परिणाम में तो विनकी संप्रदाय में मुक्ति ही परम फल है। ताते पर्यवसान सबन को अक्षर ब्रह्म में ही है, परंतु निगम जो वेद सो तो यो कहे हैं, जो नेति नेति ऐसे नहीं है। या प्रकार सो गान करे हैं। निर्गुण नो निरदेश यटपटो रसनाशी पेरे कहिए, रूप वर्ण वपु द्रष्ट पदार्थ त्याए को नवलहिए। ऐसे अक्षर ब्रह्म को निर्देश जो वर्णन करना सो अटपटो है, दुर्घट है। ताते रसना जो वाणी तासो कैसे कहिए, अर्थात कैसे कहियो न जाए। कहे ते रूप तो श्याम श्वेत अरुणादिक और वर्ण जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि और वपु जो शरीर इत्यादि चिन्ह करी के स्वरूप निश्चय हुए हैं, सो तो लोक सदृश नहीं है। क्यों? जो प्रसिद्ध पुरुषोत्तम को व्यापी वैकुंठात्मक धाम है, ताते प्रसिद्ध पुरुषोत्तमात्मक सर्वधर्म है। और पूर्व जो धर्म कहे रूप वर्ण वपु सो तो एक हु नहीं है, ताते वर्णन करवे में नहीं आई सके। अब मर्यादा पुरुषोत्तम को लीला स्थान अक्षर ब्रह्म जासो व्यापी वैकुंठ कहे है, ताको निरूपण करी के अब रसात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम पुष्टि स्वरूप तिनको वर्णन करे हैं। तेह थकी पुरुषोत्तम यड़गा लीला अचल विहार जी, ब्रह्म ज्ञानी ने मुक्ति मार्गी स्वप्ने नहीं व्यवहार जी। पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म अगणित आनंद प्रभु जे है, ते तो तेह थकी प्रथम जाको वर्णन कियो, ताते अड़गा है, अत्यंत दूर है, स्पर्श होना ही है। वेदादिकन में निरूपण कियो है। अक्षरात् परतः परः, अक्षर ते परे तो प्रसिद्ध पुरुषोत्तम और तिनते परे रसात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम। याहि ते वेदातीत शब्दातीत ब्रह्मांडातीत अक्षरातीत पुष्टि मार्गीय प्रभु चरण है। ऐसे प्रभु की लीला रासादिक स्थल क्रीड़ा और विहार जो जल क्रीड़ा सो ये दोनों ही अचल है, सदा एक रस अखंड निरंतर होए हैं। अथवा लीला अचल जो श्री वृंदावन तहाँ श्री प्रभु विहार करे हैं, अथवा लीला के विषय जो अचल श्री गोवर्धन तिनकी कंदरा में विहार करे हैं। ऐसे पुरुषोत्तम को
नित्य लीला स्थान श्री वृंदावन तामे ब्रह्म ज्ञानी जो अक्षर ब्रह्म के उपासक या अहम ब्रह्मास्मि गजते चेटी पर्यंत समानता करी के ब्रह्म को देखे हैं। ब्रह्म ज्ञानी और मुक्ति मार्गी मर्यादा पुरुषोत्तम के उपासक अथवा सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य की अभिलाषा है जिनके, ऐसे मुक्ति मार्गीय दो ही प्रकार के मर्यादा भक्त तिनको स्वप्न में हूँ व्यवहार नहीं है। ज्या श्री वृंदावन आदि अचल शशि शरद रेण बहुवेश जी वन देवी पद कुम कुम मुख सुख पर श्री रंग विशेष जी। जहाँ नित्य लीला स्थान में आदि वृंदावन जाको नाम ऐसो गहवर विशाल वन है, ताके विषय शशि जो भगवान श्री रसात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम तिनके मन को अधिष्ठाता परिपूर्ण इंदु यानी चंद्रमासो अचल अखंड उदयास्त भाव रहित सदा एक रस स्थित वहाँ है। याहिते शरद रेणु बहुवेश शरद ऋतु की रात्रि बहु नाम विशेष करी के वेश यानी बेस सो अत्यंत सुंदर लगत है। अब बहुवेश कहियो ताको ये हेतु है जो लौकिक में शरद ऋतु 2 महीना की हुई है, ताही में 1 मास तो व्यतीत भय, पाछे 1 मास बाकी है, ताके मध्य की पूर्णिमा की रात्रि है। सोहु बादर करी के चंद्रमा की चांदनी कसो सुंदर हुई है। और आदि वृंदावन में तो सर्व काल में ये सब पदार्थ दोष रहित है, सुखद है, नित्य लीला की सामग्री है, याते बहुवेश ये शब्द कहियो। अब श्री वृंदावन में शरद ऋतु तो सर्व काल में मुख्य ही है, परंतु आदि देवी खट ऋतु इच्छा अनुसारी सेवा में स्थित रहे हैं। ऐसे आदि वृंदावन में श्री पूर्ण पुरुषोत्तम पधारे हैं, ताते आपके पद जो चरण कमल तिनको संबंधी जो कुमकुम केसरसो जहाँ जहाँ आप चरण धरे हैं तहाँ तहाँ ता कुमकुम को वन देवी ने वनचरी पुलिंदिनी ते अपने मुख हृदय में कुचन पे लगावे हैं, ता करी के काम निवृत्त करे हैं। और वो केसर श्री हरि के पद पंकज को संबंधी है, ताते सरस है, शोभा अधिक है। ज्या सरिता चामी करमणि गण उभय बद्ध सोपान जी कमल कुमुद नायले सुंदर मधुर करे त्या गान जी। ज्या એટલે जहाँ नित्य लीला में सरिता रूप करी के श्री यमुना जी शोभा देत है, तिनके उदय जो 2 और के सोपान सो घाट कैसे हैं चामी कर जो सोनो मणिगण जो सब तरह के मणिन के गण समूह तीन करी के जड़े भय कमल और कुमुदिनी और नाना या शब्द ते और हु नाना प्रकार के कमल नील श्वेत कमल ही द्योतन किए तीन के विषय अली जो भौरा ते मधुर कोमल सुर सो गान करत है। कनकलता मालती मलिका विविध कुसुम मकरंद जी शीतल पवन झकोरे लहरे परसे अति आनंद जी। कनकलता जो सुवर्ण सदृश है, लता जाकी ऐसी पीरी चमेली और मालती और मल्लिका जो प्रसिद्ध है और विविध जो नाना प्रकार के कुसुम जो पुष्प तिनको मकरंद जो सुगंधता करके युक्त शीतल जो श्रम सरिता तिनके स्पर्शते अत्यंत शीतल ऐसी त्रिगुण युक्त
पवन सो झकोरे सो वह रही है। ताके स्पर्श मात्र ते अत्यंत सो अधिक आनंद होत है। अब दोई तुक करी के श्री गोवर्धन को निरूपण करे है। पद्मराग मरकत मणि स्फाटिक श्री गोवर्धन सोहे जी। ब्रह्मा रुद्र त्या कोण बापड़ा श्री हरिना मन मोहे जी। पद्मराग जो श्रेष्ठ माणिक और मरकत मणि जो अति श्याम नीलमणि और स्फटिक और वो अनेक प्रकार के मणि रत्न करके युक्त ऐसे जो श्री गिरिराज जी ते सोहे सो शोभा देत है। ब्रह्मा और रुद्र जो शिव ये दो कौन बापड़ा बिचारे क्यों जो श्री हरि श्री जी मुख्य स्वामिनी जी तिनके मन को अपनी शोभा ते वश में करत है मोहत है। नाना पक्षी निशब्द मधुरी शोभा तणो नहीं पार जी। विविध प्रकारे जुजवा कहता ग्रंथ थाय विस्तार जी। श्री वृंदावन और श्री गिरिराज जी के पक्षी ते नाना प्रकार के हंस मोर चकोर कोकिल कपोत शुक इत्यादि तीन के शब्द की जे माधुरी ताको शोभा को पार नहीं है। यही ते विविध प्रकारे यानी विविध प्रकार ते जुजवा नाम जुदे जुदे विस्तार पूर्वक कहे तो ग्रंथ जो वल्लभाख्यान ताको विस्तार होय ताते विशेष नहीं कहे हैं। श्यामा शतदल नयन सुंदरी जूथ तणो नहीं पार जी। अनेक रास मंडल रचना रची खेले श्री नंद कुमार जी। अब श्री आदि वृंदावन में सुंदरी जो श्रुति रूपा प्रभृति है ते कैसी है जो श्यामा सदा 16 वर्ष की जिनकी वय और शतदल जो कमल तद्वत है नेत्र जिनके और मधुर भाषिणी इत्यादि गुण विशिष्ट गोपी तीन के युद्ध जे समूह तीन को तहा पार नहीं। ऐसी अनंत गोपी है तीन के अनेक रस के मंडलन की रचना रची के तीन के मध्य में उत्तर दलाख्य प्रभु ऐसे रूप करके खेले श्री नंदराज कुमार जो प्रसिद्ध पुरुषोत्तम ते व्यूहादिक ते परे सर्वांग शुद्ध पुष्टि रूप भावात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम श्रृंगार रस द्विदलात्मक श्री यशोदो संगलालित विरह अग्नि रूप है। मुख कमल जिनको ऐसे श्री पूर्णानंद रसात्मक श्री कृष्ण नंदात्मज ते उनके मध्य में नायक होय के खेले सो रास लीलात्मक अनेक क्रीड़ा करत है। या को भावार्थ यह है जो गुणातीत विप्रयोगात्मक धाम निकुंज वैभव ताके अधिपति नाथ शुद्ध उत्तर दलाख्य विरह अग्नि स्वरूप श्री प्रभु चरण वृंदावन चंद्र विठलेश्वर श्री गुसाई जी ऐसे नंदनंदन रूप ते अनेक रास मंडल की रचना बनाई के क्रीड़ा विहार करत है। अब और हो कहत है एणी पेरे नित्य नवली लीला घोष वाद्य जनकार जी। अंग स्वेद मकरंदे मोहिया मधुप करे गुंजार जी। या रीति करी के नित्य सो अखंड और नवली सो नई नई या को भावार्थ जो आप नित्य नई लीला करत हैं तिनको हो नित्यत्व है। अब ऐसी लीला करत है तब अनेक प्रकार के शब्द तो है तो सो कहत है घोष जे नुपुर बिछिया और बाजूबंद
बेरखिन के तरह तरह के नाद होत हैं और वाद्य जे सारंगी, सितार, मंजीरा, खंजरी, ढोलक प्रभृति तिनके शब्द झनकार होत है, सो कोमल कोमल शब्द होत है। और रास क्रीड़ा के समय श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के सर्वांग को स्वेद जो पसीना ताकि सुगंध ते मोहे भय, ऐसे जो मधु भक्त नेत्रंते श्री मुखारविंद के ऊपर गुंजार करत है। अब ये नित्य लीला को वर्णन करके अब यह जगत की उत्पत्ति कहत है। ए प्रभु ने मन इच्छा उपनी यश थावा विस्तार जी, अधिकारी पाखे वाणी नहीं कोने उच्चार जी। ए जोवे प्रभु सर्वकरण समर्थ पूर्व जिनको वर्णन कियो, सो श्री गुसाई जी तिनके मन में ऐसी इच्छा भई जो अब कछु हमारे यश को विस्तार होय। तब ही मैं जो गोपाल दास हूँ ताके ऊपर परम अनुग्रह करके अपने श्री मुख पद्म को अधरामृत रूप उगार मोको दियो, ताही ते मोको आपके निज स्वरूप को और सुयश को ज्ञान भयो। अब मैंने ये विस्तार कियो है, परंतु ये वाणी परात पर तर है और श्री गुसाई जी के श्री मुख कमल संबंधी है। ताते ये वल्लभाख्यान रूप जो वाणी सो केवल या के जो अधिकारी है तीन परत्व ही है, बिना अधिकारी के लिए नहीं है। ताते नहीं कोने उच्चार, ताते ये वाणी हर कोई अन्य मार्गीय मर्यादा मार्गीय लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम के उपासक, चतुर्व्यूहादिक अन्य अवतारादिकन के उपासक, ब्रह्म ज्ञानी, अन्य संप्रदाय, अन्य संबंधी, प्रवाही, व्यभिचारी इत्यादि जीवन के आगे ये वाणी सर्वथा ही उच्चारण करवे लायक नहीं है। अब जा रीति ते सृष्टि उत्पन्न भयो सो कहत है। भ्रूभंगे थी सृष्टि निपनी अति सुंदर ब्रह्मांड जी, 14 लोक नाना विचित्रे भूमंडल नवखंड जी। श्री गुसाई जी की सर्व कार्यकरण सामर्थ्य रूप जो शक्ति है सो आपके भ्रुकुटी के मध्य में रहत है। सो जब आपकी इच्छा या जगत रचवे की भई सो तब तो शक्ति वहां ते प्रगट होय के कार्यकरण सामर्थ्य रूप जो शक्ति दासी ताकि दासीन की दासी द्वारपाल रूप प्रसिद्ध पुरुषोत्तम के अंतःकरण प्रेरणादिक कार्यकरण सामर्थ्य रूप ताते जाय के पुरुषोत्तम की भ्रुकुटी में प्रवेश कियो। ताते भ्रुभंग जो उनकी भ्रुकुटी को चलनो ताते सृष्टि सो संपूर्ण पदार्थ मात्र उत्पन्न भये और संपूर्ण ब्रह्मांड भयो। ताहु में विचित्र जो तरह तरह के 14 लोक, 7 नीचे के और 7 ऊपर के, ऐसे 14 लोकात्मक ब्रह्मांड उत्पन्न भयो। ताहु में ये भूमंडल मध्य में मुख्य है। ताहु में सप्तद्वीप है, सो ताके 9 खंड है। ता में ये भरत खंड अति उत्तम पुण्य स्थल है। ता जगत में अब ऐसे जगत में कहा रचना रची सो कहत है। पर पोतानी व्यक्ति करेवा सृष्टि ते द्विधा प्रकार जी, देवी आसुरी बे उपजावी प्रभु मन करी विचार जी। पर जो कोई पराई और पोतानी सो अपनी ये बात व्यक्ति जो प्रगट ता करीवे के लिए 2 प्रकार की सृष्टि करी। सो वे कौन सी? सो कहत है जो एक देवी और एक आसुरी ये 2 प्रगट करी। अब ऐसी सृष्टि प्रगट करी के
प्रभु जे हैं तिनने अपने मन में ये विचार कियो जो इन जीवन को कछु अवलंबन चाहिए जासो ये कार्य में प्रगट होए यही ते आपने भक्ति सुंदरी ने माया दासी बेमूरत प्रगटावी जी तेमा पहली नख शिख सुबगा श्री हरि ने मन भावी जी। भक्ति सुंदरी जो प्रेम लक्षणा भक्ति रूपा पुष्टि भक्ति और माया जो है सो तो दासीन की दासी है, ऐसी दो मूर्ति प्रकट करी। अब दोनों में अच्छी कौन सी लगे सो कहत है। तेमा पहली नखशिखा सुभगा श्री हरि ने मन भावी। पहली नखशिखा सुभगा जो सौभाग्यवती सुंदरी जो भक्ति सो श्री हरि के मन में अच्छी लगी। अब फेरी सृष्टि की उत्पत्ति कहत है जो कृपा कटाक्षे हुआ अक्षरमा उपन्यासत्व अनंत जी भक्ति लीन हुआ सौभागी ते वैष्णव गुणवंत जी। अब पूर्वोक्त प्रकार के मूल उत्तर दलाख्य विरह अग्नि प्रभु ने प्रेरणा करी ताते तीन की प्रेरणा शक्ति की दासी जो मर्यादा कार्यकरण सामर्थ्य रूप प्रेरणा शक्ति है ताने जाय के सिद्ध पुरुषोत्तम के अंतर्गत में जाय के प्रेरणा करी जो अब जीवन की उत्पत्ति करो। तब उनकी कृपा सहित जो कटाक्ष शुभ अक्षर ब्रह्म जो व्यापी वैकुंठ धाम है तामे भयो तामे सत्व जो जीवते अनंत असंख्यात उत्पन्न भय। अब तीन जीवन में ते जे मर्यादा भक्ति में लीन भये जे वैष्णव गुण जे मर्यादा के गुण तीन करी के युक्त कहाए। अब बाएं कटाक्ष ते उत्पन्न कही के दक्षिण कटाक्ष को कार्य कहत है। बीजी कटाक्षे जे जन उपन्या माया माथया लीन जी कर्म जड़यासुर अन्य उपासक भजन धर्म थीहीन जी। बीजी जो दूसरी जेमनी कटाक्ष ताते प्रसिद्ध पुरुषोत्तम ने अक्षर की ओर देखियो ताते जीव उत्पन्न भय ऐसे जे जनते माया में लीन भय। ते कितने प्रकार के हैं सो कहत है। एक कर्म जड़ जो जड़ रूप कर्म है ताही को ब्रह्म करी के जाने हैं ते आसुरी जीव है। और असुर जे मायावादी। दूसरा अथवा असुर सो प्रवाही जीव। तीसरा और अन्य उपासक। चौथा और धर्महीन जो धर्म वैष्णव धर्म व वैदिक धर्म शास्त्र प्रभृति तीन करी के रहित और भजन जो सेवाता करी के रहित जे जीव तेहु आसुरी है। एणी प्रकारे सृष्टि द्विधा गुण मिश्रित चाली जाय जी भक्ति मार्गी जीव स्वतंत्र केवल भक्त न थाय जी। या प्रकार सो जो प्रकार पूर्व वर्णन कियो ऐसे दो ही तरह के तो देवी एक साधन निष्ठ और दूसरे निसाधन जन और 5 तरह के आसुरी जीव ते सब सृष्टि द्विधा गुण जो 2 तरह के गुण दैवी गुण और आसुरी गुण 3 करी के वे भक्ति मार्गी हो है परंतु स्वतंत्र करी के केवल शुद्ध भक्त के लक्षण उनमें नहीं है। या को भावार्थ यह है जो वे मूल में तो निसाधन दैवी जीव है परंतु इनते मर्यादा के साधन नहीं बने और शुद्ध पुष्टि मार्ग को अवलंबन या भूतल पे है नहीं।
या ते बिना साधन कहाय। परंतु धीरे धीरे वे आसुरीन में मिली गए। वीन के घर में ही तो जन्म, वीन ही को संग भयो। ताते तद्वत होय के तीन में ही मिली गए। तब वे स्वतंत्र हो गए। ऐसे स्वच्छंद आचरण चलवे लगे। तब निखालस जो केवल शुद्ध भक्ति ते रहित भये। अब ऐसे असंख्यात हाल सो मिले भये जे निसाधन जीव तिनके उद्धार करवे को श्री विठलेश प्रभु ने यत्न कियो। सो कहत है, श्री पुरुषोत्तमे वળી विचार्यो, हवे प्रकार शो करिए जी। मारी सेवा अनेक कथा रस, निरूपवा तनु धरिए जी। श्री जोशी रुक्मिणी जी और श्री पद्मावती जी तीन करी के सहित जो पुरुषोत्तम श्री गुसाई जी वृंदावन चंद नित्य लीलास प्रभु उत्तर दलाख्य विरह अग्नि रूप रास विहारी तीन ने रास लीला करते करते अपने मन में विचार फेर कियो। सो अब कहा प्रकार कहिए, ऐसो विचार मात्र ही अपने मन में ऐसो निश्चय कियो। सो कहत है, मारी सेवा जो मेरी सेवा सो शुद्ध पुष्टि पुष्टि भक्ति मार्गी अंतरंग परम फल रूप मानसी मुखारविंदात्मक विप्रयोगात्मक सेवा, ऐसी सेवा अने कथा रस और मेरी ही कथा फल प्रकरण संबंधी विरह अग्नि संबंधी चरित्र वर्णन आवे। ऐसो असाधारण अनिर्वचनीय अगाध महामुख्य रस ताको निरूपण करवे को तनु जो सन्मुख नाट्य धारण करके जीवन को सेवा रस और कथा रस को उपदेश करके उद्धार कियो। सो अब जब ऐसो विचार आपने कियो ताके हेतु कहत है, भक्त जीवना भाग्य विस्तरिया, इच्छा करी हरि सार जी। तेणे हे ते आपो पे प्रगट्या श्री वल्लभ राज कुमार जी। भक्त जे निसाधन जन और जीव जे साधारण हीन अधिकारी मनुष्य तिनके भाग्य को विस्तार भयो। क्यों? जो भक्तन को तो आप अपने स्वरूप की प्राप्ति करेंगे और साधारण जन को हो उद्धार करेंगे। भक्तन के लिए तो आप यहाँ पधारेंगे, परंतु और हु जन है तिनको हु कार्य सिद्ध होएगो। क्यों? जो इच्छा करी हरिसार, हरि जो संपूर्ण जन के दुख हरता हरि। सो श्री विठलेश प्रभु चरण तिन्ने ऐसी सार जो रूपते पहले विचारी, सो ऐसी सुंदर इच्छा करी। सो ताही कारण करी के तेने हेते आपो पे प्रगटिया, आपो आप साक्षात उत्तर दलाख्य विरह अग्नि रूप मुख्य मूल वस्तुतः श्री कृष्ण वृंदावन चंद ते ही तेने हेते सो तेजो वे निसाधन देवी जीव तिनके हेत सो पूर्ण अनुग्रहार्थ आपो आप सो साक्षात स्वयं प्रकट भये हैं। वे कौन? श्री वल्लभ राजकुमार, श्री वल्लभ जे श्रीमद आचार्य महाप्रभु जी ने ते राज सो संपूर्ण लीला सृष्टि के राजा व प्रकार समान तिनके कुमार, यानी जो सूत श्री विठल श्री गुसाई जी ते प्रकट भये हैं। ते कैसे हैं? सो कहत है, पूर्ण ब्रह्म श्री लक्ष्मण सुत पुरुषोत्तम श्री विठल नाथ जी। श्री गोकुल मां प्रगट पधार्या स्वजन की दासनाथ जी। श्री लक्ष्मण जो श्री लक्ष्मण भट्ट जी पर ब्रह्म के धामात्मक रूप तिनके सूत जे श्री महाप्रभु जी ते कैसे हैं? जो पूर्ण ब्रह्म सो भगवान मुखारविंद के अधिष्ठाता आदि देवी विरह अग्नि रूप सो तिनके सूत जे श्री विठलनाथ जी निसाधन जन हित करता ते कैसे हैं? जो पुरुषोत्तम है, पुरुष
जे भावात्मक पुष्टि रूप तिनके श्रीअंग के विषय उत्तम श्रेष्ठ मुखारविंदात्मक स्वरूप है। आधिदैविक मूल विरह अग्नि स्वरूप है। ते श्री गोकुल जे निज लीला स्थल तामे प्रगट होय के प्रसिद्ध होय के पधारे। काहे को पधारे सो कहत है। स्वजन कीधा सनाथ, स्वजन ते स्वकीय जन तीन को सनाथ करे। अपने निज स्वरूप ते संबंधित करी के उनके भीतर स्त्री भाव और स्नेह दान दियो और आप उनके नाथ रक्षक पति भय। इति श्री गोपाल दास जी तिनके दासानुदास निज जन दास विरचित प्रथम आख्यान અહીં વિરામ લે છે। આ રીતે પ્રથમ આખ્યાન વલ્લભાખ્યાન પેલું ટીકા સહિત અહીં વિરામ લે છે। બીજું વલ્લભાખ્યાન આપણે આવતા પાઠમાં જોઈશું। આપને કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો અને જો આપને આ ગમ્યું હોય તો બીજા વૈષ્ણવોને શેર કરશો। જય શ્રી કૃષ્ણ।